So the next question in this 30 days of code is of loops. So this question is about learning loops. So they are giving an input number and we have to print its table. Okay, अगर 2 दिया है तो उसका 2 का टेबल हमें प्रिंट करना है in like that. So here this is the code they have done. If you want to write, you can write another code for scanning input, but I will don't change it. तो उन्होंने यहाँ पर फाइल के थ्रू इनपुट लिया है. सो दिस इज़ द यन वी आर एक्सपेक्टिंग. मीन्स इस यन में हमारा यन होगा, मीन्स ये वाला यन होगा. तो वी वांट टू ऑपरेशंस ऑन इट एंड वी हैव टू राइट आवर कोड इन this block. Okay, so for writing this table I will declare one int I is equal to 0, I is less than or equal to 10 because हमारा टेबल 10 तक होता है. सो एंड लास्टली आई विल इंक्रीमेंट दिस. ओके, तो हमने लूप लिख लिया है. सो हियर आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, तो हमारे टेबल में 0 के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं होता लाइक दैट. सो ओके, तो मैंने इधर printf लिख लिया है. ओके, so this is the printf that would print the table correctly. So here हमारा n नहीं चाहिए और there is a small n. Okay, so this is our small n. This is %d for n means हमारा जो टेबल जिसका टेबल होगा वो %n, और उसके बाद this %d will be for our I means जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, and this would be our answer %d n star I. Okay, that is a simple question. Okay, I am running this code. Yeah, it is running. So thank you.